Shambhu border, Ambala, Haryana becomes a war zone. As government farmers' talks remain deadlocked, thousands of farmers march with the clarion call of Chalo Delhi. Face full brunt of state action. लगातार अब गैस के गोले यहाँ पर फेंके जा रहे हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर कंट्रोल से बाहर हो रही है। ये जो ड्रोन आया है, इससे टीयर गैस सेल फेंके जा रहे हैं। Tear gas shells dropped by drones, lathi charge, water cannons. A cement fortress, all borders blocked leading to the capital. The state cracking down on protest. The farmers pushing back. Politics peaks on the sideline. The stage set. MSP की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे. Kisan Kranti 2.0. All right, viewers, let's take you now immediately to the Shambhu border to get you an idea what has ensued over the course of the last 10 hours, which continues even right now while I speak. The farmers, mostly contingents coming in from Amritsar and other parts of Punjab, pushing forward to Delhi. They've been stopped where Punjab meets Haryana at Ambala at the Shambhu border, and what is ensued is for you to see. Full force of the state coming in where the farmers are concerned. There was tear gas that was used, there was water cannons that was used, and lathi charge through the course of the day. The farmers have decided they will continue to press forth, and the police and the rapid action force responding in equal measure. On the sidelines of it, the Punjab, the Haryana High Court have all come in and stated, because hearing a PIL, asking why the Haryana government is not allowing the farmers to make their way from Punjab to Haryana, as it's a protest, and they, as per the farmers, are protesting in a peaceful manner. But on the other side, the administration has made it very clear that they're going to respond in equal measure and not be on the defensive. So that's the flashpoint right now. A war zone-like situation where Shambhu border is concerned. This time around, last time it was Singhu border where the farmers had come till, but this time the Haryana police has been successful on stalling them at the Haryana-Punjab border in Ambala. I want to cut across first to Prakash Chawla, farm economy expert. He's joining us because what is the reason for all of this? One of the main reasons coming in is that the MSP has become a flashpoint yet again. The farm unions, with their set of demands, over 10 of them, their biggest sticking point has been to now legalize MSP and make it into a law. And for them, they said they waited for the last session in Parliament for that to happen. That didn't happen. Therefore, they've taken back on their protest. Not all unions are on board, but the numbers are bound to swell, especially after visuals like that. But is it an unfair demand? Many seem to suggest that, and especially, the government has made that point forward that states would practically go bankrupt if MSP actually becomes a law. Is that possible? I want to bring in Prakash Chawla, who's looked at farm economy for a while now. Mr. Chawla, the conversation right now is that this is an unfair demand. The farmers pushing forth to legalize MSP. States cannot afford it, and you're looking at possible bankruptcy. Does this argument hold true? No, not really. Why? Because when you announce MSP, anyways you are paying, especially if you see the state of Punjab, Haryana, parts of western Uttar Pradesh, Madhya Pradesh. Anyways, you are procuring. The Food Corporation of India procures large segment of its requirement for schemes like Garib Kalyan Yojana, the rationing at the ration shops, from these states. Anyways, you are paying them. All that
farmers are asking is that in some years when the crop, the production is excess, so to speak, and the global requirement is also global inventory is good enough, sometimes the prices crash. Those years, those seasons when the prices crash, it becomes difficult. The farmers find themselves in a state of flux, in a very difficult situation. So farmers are asking, especially from Punjab, that okay, anyways you are buying from us, why not give us a guarantee? After all, it is not going to be a unique law. You already have a act of parliament under in the form of National Food Security Act. You have a Food Security Act passed by Parliament, under which the ration, Yes. the Garib Kalyan Yojana is a free ration. But even before Garib Kalyan Yojana, there has been a Food Security Act. There is a Manrega Act relating to the farm sector. So why not have one more act that will give a guarantee to them, a surety, stability in the entire agriculture sector, stability to the farm economy. So, It's okay, not going to Mr. be a Chawla, as disruptor I of a bring sort. in, As you as I bring in mentioned, one of the protesting farmers, I want to ask you a question, sir. And the question tantamounts to a very simple, point, which is that of the 23 crops, which is 80% of the produce, if the government decides to, look at making the MSP legal, what the farmers clearly are asking for an MRP, at least a minimum retail price, where if the government doesn't buy, then whoever buys, that price is fixed. For them, they say it's unfeasible. It's not possible. well, anyways, these items are being produced, are being harvested and reaching the market. Anyways, right? And you are not going. Supposing you go to market, you buy atta at big basket. You buy Ashirwad atta. What is the price you are paying? Anyways, you are paying. What farmers are asking is that certain periods prices tend to crash because of distortions in the market. So once the MSP is guaranteed, the distortions will stop. Let me assure you that all this talk of a state going bankrupt will not happen. See, the food subsidy bill of the government of India is something like 2.2 lakh crore annually. And MSP doesn't mean that the government has to buy the entire lot. No, it is only a benchmark price. It's a market intervention tool. Whenever the prices tend to, crash, and mind you, the upcoming season of the wheat harvest, you're going to see shortage of grain for the government procurement scheme itself. So the government will have to give a sweetener on top of MSP. That is the state of the market right now. For instance, the MSP for the ensuing crop has been announced as 2275 per quintal. The market rate right now is 2700. The farmer does not have to even go to government procurement agency FCI anyways. So the FCI will have to give a sweetener. That is the state of a market today. The global supply chain has been disrupted because of the war between in Ukraine. Ukraine was because Ukraine is one of the largest producer of wheat. The global supply chain is under stress. Under those circumstances, it's not going to be a disruptor of sorts. It is avoidable, I'm telling you. And when you see, there was a scheme called Bhavantar. Bhavantar was a Madhya Pradesh scheme. Niti Aayog member Professor Ramesh Chand is of the view, you can check, is of the view that Bhavantar is the best scheme. What is Bhavantar? You give a difference between the market price and the MSP if the prices crash. So basically, Mr. Chawla, you're saying that as per one report that the Niti Aayog has, the feasibility of implementing the MSP is possible, which there are a lot of economists also say which is not. But they're contrarian points of view. You've given one. I want to bring in Chaudhry Savit Malik into this conversation, National President Kisan Union. Malik साहब फिर से वही बोला जा रहा है कि ये जो किसान हैं सिर्फ एक स्टेट पंजाब के हैं, हरियाणा का किसान जुड़ नहीं रहा, यूपी का किसान जुड़ नहीं रहा, ये एक पॉलिटिकल मूव है, चुनाव 2 महीने में है, ये सब उसी के लिए हो रहा है.
प्रीति जी, ऐसा नहीं है, ये इसलिए हो रहा है कि किसान से जो इन्होंने वादे किए उनको तोड़ दिया। लगातार जो दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन चला, 13 महीने तक आंदोलन चला, उसमें सरकार ने किसान से वादा किया, झूठ बोलकर इनको घर भेजने का काम किया, और उसके बाद में 26 महीने हो गए। पिछले 26 महीने से किसान के लिए कोई नीति इन्होंने नहीं बनाई, एमएसपी पे कोई बात नहीं करी, क्योंकि जो है ये सोचते थे किसान अब घर चले गए। किसान इनको लगातार कह रहे थे, लगातार इनको कॉल दे रहे थे। 6 महीने पहले बता दिया था कि आपको 13 फरवरी तक का समय दिया जाता है, अगर आप नहीं करेंगे दिल्ली की तरफ किसान कूच करेगा, 16 फरवरी को पूरा भारत बंद किया जाएगा। और यह समय इसलिए दिया गया था कि इनका शीत सत्र भी खत्म हो चुका होगा। अब सरकार का 5 साल का पूरे के पूरे जितने सेशन होते हैं वो पूरे हो गए लोकसभा के। अब सरकार लास्ट में चुनाव की तरफ जा रही है। इन्होंने ना बजट में कुछ दिया, ना किसी सेशन सत्र में दिया, ना कोई मुद्दे पे बात की। एक कमेटी बनाई थी, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। और हमारी मांगी कितनी है, वही मांगे हैं जो इन्होंने कहा था कि हम मांग लेंगे। इन्होंने कहा था एमएसपी की गारंटी पे हम बात करेंगे, गारंटी देंगे। इन्होंने 7वें दौर की बातचीत में कहा था पराली पत्ती प्रदूषण वाला मामला हमने वापस ले लिया, बिजली अमेंडमेंट का बिल हमने वापस ले लिया। वो फिर कहां से आ गया? इन्होंने कहा था हम किसानों पे जो मुकदमे हुए हैं वो वापस ले लेंगे, किसानों को मुआवजा देंगे। इन्होंने मतलब जो इन्होंने किसान से झूठ बोलकर उनको घर भेजने का काम किया है, वही तो इनके साथ हो रहा है। पर मलिक जी, फिर अगर इनके साथ वही हो रहा है तो सिर्फ पंजाब के जो किसान हैं वो ही क्यों कर रहे हैं? हरियाणा के किसान क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के किसान क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? प्रीति जी, पूरे देश से कम 200 कुछ जत्थेबंदियां चली हुई हैं। आपने देखा होगा कि भोपाल में कर्नाटक के किसान गिरफ्तार किए, पश्चिम यूपी का किसान तैयार बैठा हुआ है। और ये जितना प्रेशर डालेंगे, जितना किसान को दबाने का प्रयास करेगा, उतना किसान ज्यादा जुड़ रहा है। कोई इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि माननीय हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, क्योंकि हम सुबह से अपील कर रहे हैं कि हाई कोर्ट को देखना चाहिए कि नियत किसानों पर कैसे आंसू गैस छोड़े जा रहे, कैसे गोलियां चलाई जा रही, कैसे दुश्मन जैसा व्यवहार किया जा रहा। मुझे लगता है, अभी मैंने एक चैनल पे पढ़ा था कि हाई कोर्ट ने कहा है कि इनको किसानों को आंदोलन के लिए जगह देनी चाहिए और बात करनी चाहिए। बात करने के लिए भी ये तैयार नहीं थे। अब जब लास्ट टाइम आ गया, इन्होंने परसों बात की थी, कल 2 दौर की बात की, लेकिन वही ढाक के 3 बात करते हैं, आश्वासन देते हैं, कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है, कोई कानून बनाने को तैयार नहीं है, कोई लिखित में देने को तैयार नहीं है। मलिक साहब, मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि सारे किसान तो इकट्ठे एकजुट नहीं है। हमारे ही पैनल पे कृष्णबीर चौधरी, प्रेसिडेंट भारतीय कृषक समाज से हैं, वो कह रहे हैं कि ये एजिटेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और नहीं होना चाहिए। कृष्णवीर जी पहले से 3 किसान वो 3 बिलों के समर्थन में थे और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इनको किसानों को इनको पहले भी दिक्कत नहीं थी और अब भी कोई दिक्कत नहीं है। मलिक जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, इनकी सहानुभूति माननीय मोदी जी के साथ कृष्णबीर जी बात है। क्या लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो सरकार तय करती है, वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? चलिए, मुझे लगता है ये भी किसान हित में होंगे। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सम्मानित हैं। हेलो कृष्णबीर जी, जवाब दे दीजिए। देखिए, ऐसा है कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, इस बात का कहीं कोई किसी का विरोध नहीं है, ना सरकार का है ना कमेटी का है। अब एमएसपी की जो व्यवस्थाएं हैं वो मंडी में लागू होती है और मंडी प्रदेश सरकार के अंतर्गत आती है। अब प्रदेश सरकारें किस तरीके से लाइसेंस देती हैं और किस तरीके की नीलामी होती है, ये इनको सबको पता है। हम ये चाहते थे कि भाई ये बाजार खुल जाता, जैसा पहले कानून आए थे। अगर बाजार खुल जाता, मोनोपोली की वजह से ही तो शोषण हो रहा है, क्योंकि आढ़ती जानते हैं कि हमारे अलावा किसान कहां जाएगा, कहां मरेगा जाके उस सामान को लेके, उसकी वो दुर्गति हो रही है। तो अगर बाजार खुल जाए
और बाजार खुल के और उसमें एमएसपी से कम पे कोई खरीदी ना हो, उसके बाद मंडी अपने आप सुधर जाएंगी। तो पहला सवाल तो यही है कि ये समझना होगा। दूसरी बात यह है कि इस 23 फसलों के अलावा आलू, प्याज और टमाटर की दुर्गति हो रही है। कमेटी में हमने वो भी बात रखी है कि इस पर भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ठीक। लेकिन ये बात तो ठीक है, ये समझ में नहीं आता कि 24 के चुनाव से पहले और तुरंत एजेंडा सेट। योगेंद्र यादव ने पहली बार भी कहा था 22 के चुनाव से पहले कि हमने तो पिच तैयार करा था, ये बैटिंग नहीं कर पाए। ये किसानों के नाम पर जो हो रहा है ये कलंक है। 26 जनवरी की घटना बहुत दुखदाई थी और अब दोबारा से सिक्योरिटी एजेंसीज की जो खबरें आई और आज जो एएनआई की रिपोर्ट हमने एक देखी है, बहुत दुख होता है। ये पंजाब का किसान है, ये वो किसान है जो सारा माल, धान और गेहूं सरकार जो उस पे एमएसपी पे खरीदती है, इनका तो दर्द ही नहीं है। दर्द है बिहार का, दर्द है गुजरात का, दर्द है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, दर्द है मध्य प्रदेश, राजस्थान का। इनका क्या दर्द है? सारा पैसा तो ये ले जाते हैं एमएसपी का। और आप ये बताइए कि पहले जो सरकार थी 1,06,000 करोड़ का खरीद कर रही थी साल में, और बढ़ के 2,28,000 करोड़ का तो केंद्र सरकार ने अपनी खरीदी बढ़ाई है। आप इस स्थिति को समझिए। बोलने दीजिए एक मिनट मैं बोला नहीं सर, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। मैं आपके मलिक जी, मैं आपके पास आ जाऊंगी। जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है वो भी बड़ी पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं, पर चौधरी साहब आप बोलिए। कृष्णबीर जी खत्म करिए अपनी बात। 13-14 का बजट 27,662 करोड़ था, जो आज 23-24 में भैया बढ़ा के 1,25,000 करोड़ से ज्यादा ये मोदी सरकार ने हम लोगों के कृषि क्षेत्र के लिए किया। ये देश सबका है, अन्नदाता इस देश को अन्न खिलाता है, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन अन्नदाता के नाम पर अगर देश विरोधी ताकतें, अगर ये बहुत नुकसानदायक है। 30 सेकंड ऐसे लोगों से बोलिए ऐसे लोगों से दूर होना पड़ेगा, चौधरी इन साहब लोगों एक से चीज दूर बता होना दीजिए, पड़ेगा। और जो वीडियो देखी है ये देश के हित में नहीं है। क्या जॉर्ज सोरोस का एजेंडा ही चलेगा? ये दिल्ली आपकी भी है, ये आपकी भी है, हमारी भी है, ये सबकी है। ये गलत है, ये किसानों के नाम पर गलत हो रहा है। हमको किसानों का हम कह रहे हैं मिनिमम भैया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार तय करती है, अगर वो आप लागू कराते हैं उससे आपको क्या दिक्कत है? सरकार बिल्कुल ना खरीदे, सरकार को बिल्कुल नहीं बेचेंगे, सरकार बिल्कुल ना खरीदे, लेकिन हमारा भाव जो 2 रुपए किलो बिकता है वो तो बंद हो जाए, खुलना चाहिए। मेरी अरे आपको उसमें क्या दिक्कत है ये बताओ ना। एक सेकंड, कैन आई जस्ट गेट Arshdeep Khadial now for a minute? Arshdeep Khadial, in all of this, your top brass, Rahul Gandhi, Mr. Khadge, have promised if you come into power, you will promise to implement the Swaminathan Commission report and promise MSP. What's stopping you from doing so right now in your states that you run? Thank you. First and foremost, the Bharatiya Janata Party's anti-democracy, anti-farmers face has been exposed before the country. And had they have delivered the promises that they had made to the farmers, those 6 promises, after making a U-turn on farm laws, after tendering an apology on national TV, after 700 farmers were martyred, after Lakhimpur issue, the farmers wouldn't have had to protest again. But the Bharatiya Janata Party made a U-turn on this issue again. And Mr. Modi, when he was the chief minister before becoming the prime minister, had himself promised that MSP should be given as a legal but guarantee. You're not answering my question, Mr. Khadial. What is stopping your states which you run to already implement? I'll answer your question. I'll answer your question now. Number one, Preeti, the Bharatiya Janata Party has been subjecting the opposition ruled states to step-motherly treatment. The funds are being stopped. The packages are being stopped. The states are not being given money. They're not getting the support. Therefore, that's one impediment. Number 2, allow me to clarify one more thing. This very Bharatiya Janata Party used to say, we stand by the Annadatas. What happened now? Why are you resorting to this? Tear gas shells are being fired. Rubber bullets are being fired. Section 144 has been imposed. Then the internet has been suspended. I need to get in the farmers once again. I apologize. I know you don't. I apologize for the short time that you've had. I want to go back to Krishnabir Chaudhary and Savit Malik for 20 seconds again. Krishnabir Chaudhary जी 20 सेकंड में बताइए कि जो आज विजुअल्स आपने देखे हैं, आंसू गोले, वाटर कैनन, लाठी चार्ज, ये ठीक है?
क्या किसानों को इस तरीके से सरकार पर हमला करना, सिक्योरिटी के जवान भी हमारे बच्चे हैं, ये दंगा करना, ये कौन से किसान आंदोलनों का हिंसा था? कभी हिंसा नहीं हुई थी किसान आंदोलनों में। ये हिंसा जो है करवाई जा रही है, ये देश के हित में नहीं है, ये किसानों के हित में भी नहीं है। ये किसानों का हित अगर होता तो ये ट्रैक्टरों का कन्वर्जन हम सोच नहीं सकते। चलिए सर बोल दिया। अब साबित चौधरी, साबित मलिक, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये रद्द करिए, WTO से बाहर आइए, ये ऐसी बात अच्छा ठीक है, बोल दिया चौधरी साहब, बोल दिया। अभी साबित मलिक जी आपको लेके आना चाहती हूँ। आपने सुन लिया कृष्णवीर चौधरी को कि ये जो पूरा है ये षड्यंत्र है, ये पॉलिटिकल है और आप एक एनर्की क्रिएट करना चाह रहे हैं समाज में। प्रीति जी, मैं दो मुद्दे बताऊंगा। राजनीति ये लोग करते हैं, हम नहीं करते। हम ये, क्योंकि देखो अभी भारत रत्न 19 से किसी को नहीं दिया गया था और एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, इन्होंने 5 को थमा दिया है। लेकिन हम कहते हैं स्वागत योग्य है, वो इस लायक थे, उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी और स्वामीनाथन जी को दिया है। अगर आप उनके नक्शे कदम पर चलते हैं तो उनकी भाषा तो समझिए, उनकी नीति तो समझिए। उन्होंने तो कहा था कि किसान हित में काम होना चाहिए। इस पे मुझे एक ब्रेक लेना है। बहुत शुक्रिया जेंटलमैन, थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस। अपॉलॉजीज, सम ऑफ यू डिड नॉट हैव द काइंड ऑफ टाइम दैट you would have hoped to, or I would have hoped to have you on. But having said that, we end it from here, at least for today. But it's a conversation which is going to carry forward in the days to come, because the farmers, at least as of now, are not going anywhere. Deadlocked where talks are concerned with the government. And as I speak at Shambhu border, we are getting information that they are looking for another push forward, and they will be repulsed, is what we are getting in from the side of the administration and the state policing.